Hi, so I'm Shaleen. I'm the co-founder of Biome. Hi, this is Unish here, and I take care of the supply chain and operation part at BioMe. So if we were to tell you about Biome, so what does Biome do is that we enable beauty professionals and salon to sell beauty products to their customers. So in short, we are a B2B platform जहाँ पे salons आते हैं, वो अपने customers के लिए order लगाते हैं and जो items उन्हें professional use में चाहिए होता है, उसके वो orders place करते हैं. And we tie up with brands. We help them in delivering the products. We help them with training, and we help them giving tech solutions like CRM, website, and छोटे tools. So basically, we are a product-based company, which to empower and upskill the beauticians and beauty parlors of India. While we were scaling, we were facing solutions कि जो हमारे salons थे, they started liking the product because we launched Biome in 2022 with a GMV of, we would say, 5 lakh level. And in 6 months, we grew to a size of 1 crore per month. And in December 2022 to December 2023, we grow from 1 crore GMV to a 10 crore GMV per month brand. अब इसमें जब हम लोग 10 करोड़ पे आए तो वी स्टार्टेड फेसिंग चैलेंजेस कि जैसे हमारा कस्टमर बेस भी बढ़ा, तो कस्टमर बेस के साथ हमारे जो एक कस्टमर था वो एक ऑर्डर में मल्टीपल SKUs ऑर्डर करने लगा. सो वी स्टार्टेड फेसिंग चैलेंजेस कि जो नॉर्मल ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में होता है कि एक बॉक्स में ही वो सारे प्रोडक्ट्स डालने होते हैं. सो उसमें हमारा काफ़ी ब्रेकेज आने लगा, हमारे काफ़ी कस्टमर्स अनहैप्पी हो गए कि यार इसमें से कुछ लीक कर रहा है. हमारा रिटर्न भी बढ़ने लगे बिकॉज समझो कि वो 2 प्रोडक्ट्स जब स्मुश होके जाने लगे तो वी आर प्रोडक्ट्स आर लाइक शैम्पू कंडीशनर्स, सो वो लीक होने लगे. एंड वी फेस्ड चैलेंजेस विद डिलीवरी एज वेल क्योंकि वो टियर 3 टियर 4 में द conventional delivery network is not so strong. So at that time, Avnish suggested कि sir we should try with Shiprocket Cargo. And So what happened is that when we are scaling up our game and we started from 1 CR to 10 CR journey, we came to this realization that our clients are a B2B salon. So it's not like that I'm going to order 1 pieces or 2 pieces like that. So we had a bunch of orders where we were getting 10 pieces in a single order, and we thought that having just a B2C model to approach them and getting things delivered in a damaged condition is not good. So that's why we started the Shiprocket Cargo, which minimized this, and we were able to capitalize more from not having damages at the delivery part and last mile services. So we started the Shiprocket Cargo, and it had a very good response. We minimized our shrinkage cost like in 0.1%. So that was a great achievement, I think. so apart from shrinkage, Shiprocket Cargo is a मतलब tech based aggregator. So उससे क्या हुआ कि हमारे जितने सारे कैरियर्स हमें मिल सकते थे, वी हैड एक्सेस टू ऑल ऑफ देम. पहले हम लोग क्या करते थे कि एक डिलीवरी के पास जाते थे या अदर लोकल कार्गो के पास जाते थे. तो अब एग्रीगेटर हमको एक टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म पे मिल गया कि API से हमें पता चल रहा है कि वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है. API से ही पता चल रहा है कि यार वो अनडिलीवर्ड पड़ा हुआ है कार्गो. सो वी कुड इन्फॉर्म आवर टीम इंटरनली बिकॉज एक जब 10 करोड़ के बिजनेस में जब इतना स्केल आ जाता है, सो वी नीड अ कस्टमाइज्ड लेवल सोल्यूशन कि यार कौन सा कार्गो अटक गया है एंड कौन सा सब कुछ सही चल रहा है. इसमें इससे बेटर एडवांटेज हमें क्या हुई कि हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ के निकल गया हुई हमारी. एंड द थर्ड पार्ट वाज द बेसिक आई थिंक एवरी D2C और एवरी B2B कंपनी फेस इज लाइक that they are not able to service some part of the India part where the market is big, but somehow they are not catering to those pin codes. So हमें एडवांटेज मिल गया कि हम उन पिन कोड से भी सर्व कर पा रहे थे जहाँ पे एक मार्केट साइज था टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में. अब करंट अगर देखा जाए तो आई थिंक every Indian logistic company is focused on tier 1 tier 2 only. So with Shiprocket Cargo we had this advantage that we are able to focus on those where we also had a chance to tier 3 tier 4 cities also. एंड दैट टू इन B2B वे बिकॉज व्हाट हैपेंड वाज कि जो B2C कंपनीज जब डिलीवरीज करती थी, सो वो एक पर्सनलाइज्ड B2B तरीके से नहीं करती थी. वो बस कॉल करती थी, दे यूज्ड टू से कि सर मैं आ रहा हूँ, आप अवेलेबल रहना. वेयर एज शिप्रॉकेट कार्गो का जो अप्रोच था वो परफेक्टली फिट था एक B2B सोल्यूशन के लिए. डिलीवरी की अपॉइंटमेंट बेस्ड डिलीवरी ले लेते थे, वो पहले बता देते थे. दे यूज्ड टू होल्ड शिपमेंट फॉर 1 or 2 days कि यार आज दुकान बंद है,
आज कुछ प्रॉब्लम चल रही है, there is festival, there is cash issue. So they used to help us in such personalized solutions. And if you talk about, the future prospect of, an Indian market of B2B, we are looking at, a larger growth in, coming next for 3 to 5 years, I think. So I think that's where, Shiprocket Cargo Company, will help other than other, from other apart us, they're going to help other companies also, where India is getting catered from all the companies which are looking at, at centric approach, but जो tier 3, tier 4 cities है जहाँ पे भारत बसता है basically, Yeah. वहाँ पे I think Shiprocket Cargo will help mostly for the people like us who want to serve our country better and our market better, and that's where Shiprocket Cargo is going to capitalize more. The best advantage of Shiprocket Cargo is for the other manufacturer or pocket parties who say that it's based on aggregation and tech-enabled company. So I think being a tech-enabled company in current market scenario of India will be helping us more to revitalize and capitalize more the market of India. So वहाँ पे एक एडवांटेज दिखती है हमें कि जहाँ पे हम अदर लोगों को ये सजेस्ट कर पाएंगे कि Shiprocket Cargo यूज़ करना चाहिए. And the second is because it's a aggregated company, it can provide you access to those pin codes also where you can serve better. And the third part is that it gives you a customized solution to most of the complex structure of logistic companies, and you get real time updates also. So I think these three are more basic things which needs to be crack into logistic market, and I think not 100% then 90% Shiprocket Cargo has helped crack these in Indian market. According to me, I feel कि logistics industry in India तो अभी वो टाइटैनिक वाला जैसे आइसबर्ग मूवमेंट है तो उसी के थ्रू गुजर रही है कि वी हैव ओनली क्रैक डिलीवरीज इन द टीयर 1 टीयर 2. जो अभी पूरा भारत एक्सेस करना है वो तो अभी समुद्र के नीचे पड़ा हुआ है. एंड आई फील कि जो उस पार्ट को बेहतर क्रैक कर लेगा ही वुड बी द पार्टनर जो आगे जा पाएगा बहुत ज़्यादा. एंड जिस स्पेस पे ब्लिंकिट एंड पीपल हैव स्टैंडर्ड्स फॉर अस इन टीयर 1 टीयर 2, I feel कि every company would come to their standards because वो फिर एक expectation जो अभी यहाँ के लोगों को है वो धीरे धीरे spread हो जाएगी. And I feel everyone will be able to achieve that. And Shiprocket having such a big infrastructure, having such intelligent people and having access to so many D2C brands, वो लोग भी ये market easily capture कर लेंगे. And in some time I feel it would become a perfect plan कि जो D2C/other brands वाला infrastructure होगा, a big logistics company को उसके हार्ट पे logistics मतलब एक big brand के हार्ट पे logistics ही होगा डिलीवरी का, तभी वो एक भारत लेवल पे क्रैक कर पाएंगे. As sir said that Indian market is mostly looking a growth of 30% in the next 5 years. So I think if you are going to capitalize on logistic part of your company and where this Shiprocket Cargo comes in, I think that's where you can boost your the company market, and you can boost your GMV level on daily basis or something like that.